नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक से आजकल हर दूसरा पर्सन सफ़र कर रहा है, दैट इज़ बैक पेन। बैक पेन, कमर दर्द, लोअर बैक इश्यूज दैट। और इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रॉन्ग पोस्चर, आप गलत तरीके से बैठे हैं जिस वजह से आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दैट इज़ ऑल द रीजंस। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लेटर एज पे जाकर होती है या यानी कि ओल्ड एज में होती है। इस प्रॉब्लम से आजकल यंगर जनरेशन भी बहुत सफ़र कर रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासनास बताऊंगी जिससे कि आप बैक पेन को क्योर कर सकते हैं, अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड अपनी बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The first asana is Bhujangasana, the cobra pose. Firstly, lie down on your stomach. पैर बिल्कुल सीधे मिले हुए. Place your hands on the sides of your body. Now, bring your hands to the level of the chest. अपने हाथों से चेस्ट को प्रेस करें. Putting your weight on your palms and pressing the floor. धीरे धीरे इनहेल करते हुए lift your head, chest and stomach off the floor while keeping your navel on the floor. नाभि तक शरीर को उठाएंगे. थोड़ी सी एल्बोज आपकी बेंड रहेंगी and relax your shoulders. Stay in this asana for 15 to 30 seconds or repeat it 2 to 3 times. Breath should be normal. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए Bring your abdomen, chest and head back to the floor. अगर आपकी बैक में बहुत सीवियर पेन है और कोई लोअर बैक इशू है तो आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं. भुजंगासन का वेरिएशन सरल भुजंगासन का प्रयास कर सकते हैं. तो चलिए. So your lower arm should be resting on the floor so that your elbows are at 90 degree. Then inhale and raise your neck and shoulders. Stay in the asana and relax your shoulders and back muscles. Do not push yourself out of your comfort zone and slowly come back. Rest your head on the floor and relax your body in Makarasana. Place your hands under your head and rest your head on one side, either on the left or on your right. Spread the legs apart so the heels touch the corners of your yoga mat with the toes pointing outwards and heels in. Breathe normally while you maintain the asana. It gives relaxation to our entire nervous system, body and mind, and also extra relaxation to the back region. दूसरा आसन है अधोमुख स्वानासन और वी ऑल्सो कॉल दैट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज. अपने हाथों को शोल्डर्स के साथ रखें. पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर लगाएं. नाउ वाइल इनहेलिंग स्लोली रेज द हिप्स अपवर्ड्स with the help of thigh muscles with straightening your feet. Raise the hips as up as you can. कमर को ऊपर उठाएं. चेस्ट और फेस को नीचे की तरफ झुकाएं. Keep your back straight. With this, move your head inwards and touch the ground of your head to the floor. You don't need to do this when you have pain in your back because it will need an additional or extra stretch at your back. Keep your arms and elbows straight. There should be an equal body weight between hands and toes. Don't bend your knees or lock them. Try to touch your heels to the floor and hold the position for 1 minute. This asana helps you to tone muscles of your core and back and also strengthen your hamstring. This asana should not be done if you have any wrist, hip or ankle injury. Come back in tabletop position and relax. तीसरा आसन है मर्जरी आसन और कैट एंड काउ पोज. Come in a tabletop position. अपने घुटनों और हाथों के बल आ जाएं, such that your back forms a tabletop and your feet and hands are its legs.
Your hands should be placed flat on the floor, right under your shoulders. Look straight ahead. Now inhale and raise your chin with tilting your head backwards. Push your navel down and अपनी tailbone को ऊपर की ओर उठाएं. Hold the pose for few breaths and come back and do the counter movement. Exhale and drop your chin to your chest as you arch your back and relax your hips. ऊपरी कमर को बाहर की तरफ गोल करें. Hold the position. Do both the movements 5 to 6 times or repeat it 2 to 3 minutes. This asana makes your spine flexible and strong. फोर्थ आसन है बाल आसन और चाइल्ड पोज. Sit in Vajrasan. You can either keep your knees together or apart. Inhale and slowly bend forward. हाथों को शरीर के दोनों तरफ से आगे की ओर बढ़ाते हुए ज़मीन पर रखें. And touch your forehead to the floor with exhalation. Lay your hands on the floor towards the front of yoga mat. Palms placed facing down on the mat. Now gently press your chest on the thighs. By the name reflects, this asana is the resting pose. It relaxes or stretches your spine, or by stretching, it also helps to ease your neck and back pain. Alternatively, you can also keep your arms alongside your body. Make sure that your arms are facing up. Hold the position for 45 seconds to 1 minute and regulate your breath. This asana should not be performed by pregnant women and if you have any knee injury. Gradually raise your upper body. अपनी स्पाइन को सीधा करें और वापस वज्र आसन की स्थिति में आ जाएं. पांचवा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन और लॉर्ड ऑफ फिशेस पोज. सिट ऑन द फ्लोर विद योर लेग्स स्ट्रेट आउट इन फ्रंट ऑफ यू. कमर बिल्कुल सीधी और पैरों को मिलाकर रखें. Bend your knees, put your feet on the floor. Then slide your right foot under your left leg to the outside of your left hip. Step out the left foot over the right leg and stand it on the floor outside your right hip. The left knee point directly up at the ceiling. Twist your waist, shoulders and spine towards your left, placing the left hand against the floor just behind your spine. Turn your head by looking over the left shoulder at the right foot. There are many ways you can place your arms to increase or decrease the stretch. But to do simply, you can place the right hand behind you and left hand on the right knee. You can also place your right hand's elbow on your left knee with your palms facing to the left side. This asana energizes and strengthens your spine and helps to relieve the stiffness and back pain and also cure the slip disc problem. Stay in the asana for 30 seconds to 1 minute and repeat it to the other side. Don't pressurize your spine by twisting it too much. So, these are the 5 yoga asanas जिससे कि आप अपनी बैक पेन को बहुत ही जल्दी रिलीव कर सकते हैं. With the daily practice of these asanas, you can relieve your back pain very effectively. Thank you so much for watching. Stay healthy, stay safe.